Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam, ma'am. Hello, ma'am. How are you, ma'am? Alhamdulillah, I'm great. How's that going? Yeah, good. So the slide visible for you? Yes, ma'am. और मेरी आवाज clear आ रही है आप सबको? Yes, ma'am. Alright, perfect. Okay, I'll kindly control on your mics, everyone. Let's get started from the very first. That is, listen up to me. English has 26 letters, but it has 44 sounds. 26 letters with 44 sounds. That's why spelling and speaking can feel confusing sometimes. Today, we start learning all 44 sounds of English one by one. So these 44 sounds are the building blocks of every word you speak. Master them, and people will understand you clearly. If you miss them, and words like ship and sheep, live and leave will keep tripping you up. So, no grammar, no boring rules, just listen, repeat, and feel the sound. By the end of this course, you will hear the difference and speak with the confidence. So, let's start with the sound number one, that is I as a I, like I has a short vowel sound. Okay, so are you ready for it? Repeat it after me. Are Yes, you Yes, ready ma'am. for it? Yes, ma'am. Perfect. Okay. तो आइए ये देखिए हमारे पास है सबसे पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन आपको बताऊं आई एज अ इ कैसे आप साउंड करते हैं सो द आई एज अ इ साउंड इज अ शॉर्ट फ्रंट वोवल साउंड it is a soft short and commonly used in English pronunciation. For example, ship, fill, live, sit, fit. The common mistake we make in our sentence, like I live in Islamabad, it's ये गलत है. I live in Islamabad बिल्कुल गलत. आप live पढ़ेंगे इसका. I live, देखिए I live in Islamabad, I live in Karachi, I live in Rawalpindi, I live in Peshawar, I live in Lahore. जहाँ कहीं पर आप रहते हैं, I live in. जब आप leave को live पढ़ते हैं, just check this sentence कि कितना confident लगता है और कितना अच्छा सुनने में लगता है. ठीक है, it's all about the I as a E sound. ठीक है, अब इसको E कैसे पढ़ना है? अगर आप इसे E करके पढ़ेंगे तो भी गलत है. E. Now the perfect pronunciation of it, what? It fully break लगा है. Listen it. Ship. Do not stretch this sound. Sheep. This is incorrect. आप इसे क्या पढ़ेंगे? Ship. Keep the sound short and relaxed. Ship. Instead of saying sheep. Fill. Instead of saying peel. ये बिल्कुल गलत है. Fill. And do not change I as a E. अगर आपको repeatedly एक ही मतलब कि कोई topic है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं और उसमें बार बार आपको I को as a E sound करना है, same word है fill. ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक में fill पढ़ लिया, दूसरी मर्तबा जब आप इस word को पढ़ने लगे तो आप इसे feel पढ़ लें, तब भी आप incorrect ही consider होंगे. Mouth slightly open and relax your lips. 9 p.m. Okay. Do not make the vowel too long. It sounds it. I hope it's clear. Let's come to the practice words. So, are you ready for? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. All right. मेरी आवाज clear आ रही है ना आप सबको? Yes, ma'am. You're clear. All right. Thanks. आइए start करते हैं. Ship, sit, fill, fish, pick, rich, drink, kitchen, busy, minute, little, finish, system, ticket, village. Instead of saying a village, ticket, system, finish, little, finish your meal. ये सब गलत है. आप इसे पढ़ते हैं finish your meal,
Finish your meal. It sounds more confident. More words. Clinic, fitness. Listen, listen, listen. Sister, middle, simple, winner और winter. अमेरिकन एक्सेंट में हम इसे पढ़ते हैं winner, जबकि ब्रिटिश में हम पढ़ते हैं winter. Begin, interest, different, dinner, finger, picture, swimming, printed. Singer, history, visitor, 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 cricket, lipstick, building, 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 chicken, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. My dear students, now practice with me. Ship, ship. Don't say ship, sit, field, fish, bake, rich. No, 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 no. Stop using these kinds of pronunciation. अब से आपने कुछ ऐसे पढ़ना है. Ship, ship, sit, sit, fill, fill, fill. The I as a E sound is a short and relaxed. You don't need to stretch these sounds, and you don't need to stretch the lips too much. Keep the lips slightly spread and mouth slightly open and tongue near to the front. Okay? And make sure your sound must be short. Relax the jaw, practice slowly and clearly, listen it to me carefully, and use this sound elegantly. Let's start it. Ship, sit, fill, fish, pick, rich, drink, kitchen, busy, busy, minute, little, finish, system, ticket, village, ticket, village, clinic, fitness, listen, sister, middle, simple, winter or winner, begin, begin, interest, different, dinner, finger, picture, picture, swimming, printed, singer, history, visitor, cricket, lipstick, building, chicken, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. आप में से कौन सा बच्चा ready है जो कि ये मुझे पढ़ के सुनाए? Who's ready for? Me. Raise your hands. All right, just first 15 आपने पढ़ने हैं या फिर second 15 कोई सा एक कॉलम select करे और वो पढ़े. अपने माइक्स पर कंट्रोल रखिए. Just raise your hands. Yes, Angel Habib, first you. Assalamualaikum, ma'am. Am I audible clearly? Walaikum salam. Yes, you are. Okay. Clinic, fitness, listen, sister, mother, simple, winner, digit, interest, different, dinner, single, picture, swimming, printed. Very good. Yes, Rida. Yes, ma'am. Ship, sit, fill, fish, pick, rich, drink, kitchen, busy, minute, little, finish, system, ticket, village. Good. Yes, Alicia Fatima. Singer, history, visitor, cricket, lipstick, building, chicken, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. Very good. Sahrish. Yes,
Yes, Evan Maru. Yes, ma'am. Clinic. Clinic. Fitness. Listen. Sister. Middle. Simple. Winner. Began. Interest. Different. Dinner. Finger. Picture. Swimming. Printed. Very good. All right, my dear participants, यहाँ पर मजीद वर्ड्स की जरा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आगे नजर आ रहा है आपको 31 वाला singer, singer, history, visitor, 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 cricket, lipstick, building, building, chicken, chicken, bridge, bridge, district, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. Yes, Sayyida Nausheen Gilani. Yes, ma'am. Singer, history, visitor, cricket, lipstick, building, chicken, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. There's Very good. Yes, Juba. Yes, ma'am. Singer, history, visitor, ticket, lipstick, building, chicken, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line. Very good. Yes, Samira Asma. Yes, ma'am. Singer, history, visitor, cricket, lipstick, building, chicken, bridge, district, The milk, word chick, not a chicken. Chicken. chicken, okay, bridge, district, milk, window, picnic, silver, ticketing, finish line, finish line. Very good. All right, my dear participants, बहुत अच्छे से आप सब जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब बात आती है सेंस की, अल्फाज में तो आप सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से वर्ड्स के प्रोनाउंस कर लेते हैं. But when the time comes about the सेनेसन, फिर क्या हो जाता है, सब कुछ माइंड से ब्लर. इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है. Do you know what? Practice makes a man perfect. So my dear students, आप लोग ने क्या करना है, सेनेसन में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है. Let's see. यहाँ पर टारगेटेड वर्ड मैं आपको बता दूं, शिप, सिट, फिल, फिश, पिक. इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंसेस में. इन द ब्रिटिश एक्सेंट हम बोलते हैं जुमले को सेंटेंस, सेंटेंसेस. एंड इन द अमेरिकन एक्सेंट हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंस, senescence. It sounds like this, okay? So there is a difference between pronouncing. Well, आते हैं number one सेनेसन की तरफ. The ship is sailing in the ocean. देखते हैं. The ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish from the market. We visited a small village near the river. आपके लिए रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं कि किस पर आपने आई को लगाना है. फिर और क्या चाहिए, आप सब कर सकते हैं. Repeat after me. The ship is sailing in the ocean. The ship is sailing in the ocean. The ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline.
I need to fill this form before the deadline. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish. She picked a fresh fish from the market. She picked a fresh fish from the market. She picked up fresh fish from the market. We visited a small village near the river. We visited a small village near the river. We visited a small village near the river. Don't say small. राइट को गोरे पढ़ते हैं ऑलराइट क्यों बिकॉज ए एल है ना सिंगल हो या डबल हो माइंड में रखिए कि आपने से ओ पढ़ना है ओके वी विजिटेड अ स्मॉल विलेज नियर द रिवर एक बार फिर से सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं से इट अलाउड विद मी ओके लेट्स स्टार्ट द शिप is sailing in the ocean. Please sit in your seat okay? Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fish from the market. She picked a fresh fish from the market. Sorry. We visited a small village near the river. We visited a small village near the river. For the last time, मेरे साथ read करें सारे. The ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish from the market. We visited a small village near the river. आप टारगेट करें कि आपने प्रैक्टिस मिनिमल पेयर्स डेली लाइक अ शिप एंड शीप सिट एंड सीट इस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड कंपेयर विद द नेटिव स्पीकर्स अपने वॉइस को रिकॉर्ड किया करें रिकॉर्डिंग लिस्ट में नहीं व्हाट्सएप लिस्ट में रिकॉर्ड करें ताकि जो चीज़ आपके सामने बार बार ओपन हो सके आप उसको ओपन करके सुने रिपीट होके आपको खुद पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आया है and the next, read short sentences loudly every day and focus on a mouth position and a tongue placements. And for this, you must need to stand in front of the mirror. And the last, that is consistency is the key to clear pronunciation. कोई भी चीज़ हो उसमें लगातार अगर आप करते हैं मेहनत तो आप अचीव करते हैं अगर आप लगातार नहीं रखते तो क्या होता है बीच में ब्रेक ब्रेक करके कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाते हैं इसलिए जब भी आपकी क्लास हो उसके बाद 20 मिनट्स के लिए आप खुद को एक साइड पे कर दे कमरे में और वहां पर अलाउड में उसी की प्रैक्टिस करें जो कुछ आपने क्लास में सीखा और उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करें अपने वॉइस नोट को एंड देन उसको कंपेयर करें फॉर द नेक्स्ट और थर्ड डे Yes, it's your turn. Alicia Fatima. The ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish from the market. We visited a small village near the river. Very good. Yes, Aruj. Hello, Aruj. Yes, Shelanu. Yes, ma'am. The ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish from the market. We visited a small village near the river. Very good. Yes, Angel Habib. Yes, ma'am. Okay, the ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill the form before the deadline. She picked a fresh fish from the market.
visited a small village near the river. Very good. देखिए आप सब कर सकते हैं and it is very easy. Yes, Asfa. Assalamualaikum. The ship, the ship is sailing in the ocean. Please sit in your seat and fasten your seat belt. I need to fill this form before the deadline. She picked a fresh fish from the market. We visited a small village near the river. Average, you need more practice. Words पर गौर करें कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आई वाले वर्ड्स जिसमें आई की आवाज दे रहा है इसको आपने क्या करना है फास्ट पढ़ना है. Ship, sit, fill, fish, pig. Right? Let's come to the paragraph practice. Everyone, repeat after me. We visited the ship museum in the port city last weekend. The guide told us about the history of the old ship and their journeys. We sat in a small theater and watched a short film. It was very interesting. After that, we filled our feedback forms and picked up some souvenirs from the gift shop. It was a wonderful and educational experience for all of us. Again, we visited the ship museum. Ship museum. We visited the ship museum in the port city. In the port city last weekend. The guide told us about the history. The guide told us about the history about the. Don't say about the. हर word को हर letter को नहीं pronounce किया करें. ठीक है my dear students, कोशिश किया करें टी जब भी किसी अल्फाज के आखिर में आए और वो फॉलो करे वोवल को. जैसे कि अबाउट में देखिए किस चीज को फॉलो कर रहा है टी ओ यू वोवल लेटर है ना. तो वोवल को अगर वो फॉलो करता है तो उसके ऊपर ब्रेक लगा दे या तो झटका लगा दे. अबाउट द इससे क्या होता है आपका अंदाज़े बयान गोरो वाला हो जाता है. The guide told us about the history of the old history of the old ship and their journeys. We sat in the small theater. We sat in the small theater, small, and watched a short film. And watched a short film. It was very interesting. After that, it's not after. It sounds after that. We filled our feedback forms. We filled our feedback forms and picked up some souvenirs from the gift shop. It was a wonderful and educational experience for all of us. ये आप सब ने प्रैक्टिस करना है क्लास के बाद और अपने वॉइस नोट को सेव करना है. रिकॉर्ड करें और उसको सेव करें और फिर 10 से 20 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करें और फिर दोबारा उसके साथ एक दफ़ा कंपेयर करके सुने. आपको पता चले कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है विद इन अ मिनट एंड 2 minutes. Yeah, Sehrish, do you want to read this? Yes, ma'am. Please. We visited the ship museum in the port city last weekend. The guide told us about the history of old ships and their journeys. We sat in the small theater and watched a short film. It was very interesting. After that, we filled our feedback forms and picked up some souvenirs from the gift shop. It was a wonderful and educational experience for all of us. Okay, so from the gift shop is a from the gift shop. Okay. All right, good one. From the yes, ma'am. Yes, from the gift shop. Gift shop. Don't say gift. हर letter को नहीं pronounce करना होता. It sounds a gift from the gift shop. Right? Yes, Ananya Khan, please read this paragraph.
How about Sayyid Noshin Gilani? And may I read Yes, it? ma'am. We visited the ship museum in the port city last weekend. The guide told us about the history of old ships and their journey. We sat in the small theater and watched a short film. It was very interesting. After that, we filled our feedback form and picked up some souvenirs from the gift shop. It was wonderful and educational experience for all of us. Very good. All right, my dear participants, आप सबने बहुत अच्छे से participate किया है short vowel sounds में. अब हम long vowel sound की बात करें. Long में क्या होता है? I को हम E करके sound करते हैं. मतलब कि I जब double E की जगह पर same sound करता है. आ रही हूँ. 44 sounds है आपके पास. जिनके सिमिलर से उनको हम एक ही दिन में डिस्कस करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा I को as a E करके प्रोनाउंस करना. अब हम सीखेंगे कि I को आपने किस तरह से ई करके साउंड करना होता है. आई तो नहीं आएगा, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन डबल ई उसकी जगह पर हमने लगाना होता है स्पेल में. साउंड सेम है. ई कैसे करते हैं? ई. Okay, so the E sound is a long front vowel sound. It is clear, stretched, and commonly used in English pronunciation. Many Pakistanis learner confuse like with the A and E, right? आइए यही चीज हमने क्लियर करनी है. Let's say what's the mouth position would be. Your lips slightly spread, mouth slightly open, tongue near the front. Stretch the sound properly and keep the song long and clear. Let me make some differences between it. Ship, sheep, fill, feel, live, leave, leave, leave. Sounds like E. आपने repeatedly sound करना practice करें. Say it aloud with yourselves. Sheep, see, feel, leave, green, teacher, teacher. Do not make the sound too short like a sheep, see, feel, leave, green, teacher. No. आपने क्या करना है? इसको लॉन्ग और क्लियर करना है, तभी तो आपका अंदाज़ा बयान गौरव वाला लगेगा और आपको उनकी ज़बान समझ आएगी. Sheep, see, feel, leave, green, teacher, people, complete, machine, police. हम कहते हैं ना police ये गलत है. It's a police. Weak, keep, clean, dream, easy. Meet, seat, team, speak, degree. Meal, beach, deep, receive, believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Keep the lips slightly separate and mouth slightly open, tongue near the front, and keep the sound long and clear. Practice slowly and clearly and listen carefully to me. Believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Email, ceiling. अब आप में से बच्चे कहेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर डबल ई की आवाज दे रहा है या पर सिंगल ई, जैसे कि ईमेल है, हम इसे एमएल भी पढ़ सकते हैं. My dear students, देखिए, practice makes some none perfect. Listen to the native speakers, attend your classes. ये 44 sounds जो आपके होंगे, इनके lectures आप attend करें. देखिएगा किस तरह से चेंज आता है. आपको खुद समझ आएगा, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे फिर वर्ड्स को. ऐसे नहीं कि इनके टिप्स एंड ट्रिक्स है और बात हो गई. नो, हर्फ सिर्फ हमारे पास 26 है, साउंड्स उनके 44 है. लेकिन हमें पाकिस्तान में कितने सिखाए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं? 36, 37 हार्डली. अच्छे से अच्छा स्कूल हो तो वहाँ पर 38. बस इससे ज़्यादा बच्चे को नहीं सिखाए जाते हैं. जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है ये एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है SKH. आइए प्रैक्टिस करते हैं फॉर द लास्ट कॉलम. ईमेल,
ceiling, screen, screen, reason, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer. अच्छा जिस तरह हम पिज्जा को पिज्जा पढ़ते हैं गलत है, इट साउंड्स अ पिज्जा, टी जेड की आवाज देते हैं, डबल जी होता है। लेकिन जो अगर फ्रीजर की बात आए ना, ये सिर्फ वैसे तो हमने कहना चाहिए कि फ्रीजर फ्रीजर फ्रीजर, लेकिन आजकल के जो गोरे हैं ना नेटिव स्पीकर्स अमेरिका के, वो इसे पढ़ते हैं फ्रिट्जर फ्रिट्जर, टी जेड की आवाज लगाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो speak fritzer. The next is speaker, speaker, speaker. Teacher, teacher, teacher. Okay. I hope कि आप सबने मेरे साथ practice की हो. Now speak along with me. Sheep, see, feel, leave, green, teacher, people, complete, machine, police, weak, keep, clean, dream, easy. Who's ready for पहले 15 आपने words पढ़ने हैं. मैम ये As a कंप्लीट ma'am, में I am ready. बाकी जैसे शेप सी है, यहाँ दो दो वावल वर्ड्स हैं और हम इसे लॉन्ग कर रहे हैं, ये कंप्लीट में इसको क्या लॉजिक है लॉन्ग करने का? कंप्लीट में ETE. देखिए ETE. E क्या है? वोवल. T क्या है? कॉन्सोनेंट. E क्या है? अगेन वोवल. वोवल कॉन्सोनेंट वोवल. VCV. जब VCV मतलब जब लगता है तो वहां पर इसको लॉन्ग साउंड कहते हैं. ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी के दो वावल वर्ड्स एक साथ आए, मतलब थोड़ा टी के बाद जैसे ई आया है, इस तरह भी नहीं, हो ऐसे बहुत सकता है। It's not compulsory. You can see ओके machine, machine. देखिए यहाँ पर I को E आवाज देनी चाहिए. Machine. Now INE VCV है ना, इसलिए हम इसे यस machine करके पढ़ते हैं. इससे भी ज्यादा बेटर ये है कि आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करें. That would be better, right? ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। Rob? Okay, जिसने पढ़ना है वो hand raise कर ले. Yes, ma'am, Tanveer. First 15. Sheep, see, feel, live, green, teacher, people, complete, machine, police, weak, keep, clean, dream, easy. Good, dear. Very good. Yes, Suera. Okay, ma'am. Sheep, see, feel, live, green, teacher, people, complete, machine, police, weak, keep, clean, dream, easy. Good, dear. Mubarak Ali, can I put my control रखिए? Yes, Anania Khan. Yes, ma'am. Sheep, see, feel, live, green, teacher, people, complete, machine, police, weak, keep, clean, dream, and easy. No, dear, it's not like that. You need more practice. Sheep, इसमें ई की आवाज ना बिल्कुल क्लियर हो. आपको जो पूरा अल्फाज होते हैं ना, everyone listen to me. This is very important tip. आपके लिए आसानी हो जाएगी. आपको जो पूरा अल्फाज होते हैं ना अंग्रेजी में, याद रखिएगा वो डिपेंड ही आपके वोवल के साउंड पे करता है. अगर तो आपका वोवल शॉर्ट आवाज दे रहा है तो आप पूरे अल्फाज को शॉर्टली प्रोनाउंस करेंगे. जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने सीखा शिप, फिट, फिल. लेकिन अगर आपका अल्फाज में मतलब कि वोवल लॉन्ग साउंड दे रहा है तो आप उस पूरे अल्फाज को खींचेंगे. और उसमें स्पेशली कौन सी आवाज को खींचेंगे, कौन सा लेटर को? दैट इज योर द वोवल. शीप, ईप. देखिए ई यो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. शीप, सी, फील, लीव, ग्रीन. Do not make the sound too short. Keep the sound long and clear. You can do this. All you need to have practice. Practice, practice, practice. Practice makes a man perfect. Well, it's your turn. Sumaira, are you in a class?
Yes, ma'am. Sheep, see, feel, leave, green, teacher, people, complete, machine, police, weak, keep, clean, dream, easy, Easy. easy. Yes, ma'am. Easy. Not a easy. It's a easy. E को खींचेंगे पहले वाले को. Easy. Easy. Yes. अब जरा से इसको नॉर्मल होके पढ़े. Easy. Easy. Alright. Come to the next one, that is meet second column. अब आप सबने second column की practice करनी है और पढ़ना है. Meet, seat, team, speak, jiggery. इसमें क्या है? Jiggery, jiggery. Meal, beach, deep, receive, believe. ठीक है? Believe, cheese, repeat, season, read. अच्छा, कुछ लोग इसको रेड भी पढ़ते हैं, फिर आगे से कॉन्फिडेंट होके कहते हैं कि मैम ये तो मैं ब्रिटिश एक्सेंट में रेड पढ़ रही हूँ. आई रेड द बुक. आप मुझे बताएं किसी गोरे को जो इसे रेड पढ़े. इसे पढ़ते हैं read, read. Freedom. Ma'am, red is the third form, no? Read, freedom. Read के तीनों फॉर्म read ही है. Read, read, read. Write के forms different है. Write, trot, written. Read पढ़ना R-E-A-D. First form, second form When we verb, use have and Ma'am, we pronounce read or read? read. First form हो, second form हो, third form हो. तीनों के spelling भी same है और तीनों का word भी same है. ठीक है? Its pronunciation is read, read. Ma'am, pronunciation is same. Yes, pronunciation same है आपका. जब spelling same है तो फिर pronunciation भी same ही होता है. Yes, Rida, it's your turn. Yes, ma'am. Meet, seat, team, speak, degree, meal, beach, deep, receive, believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Very good. Yes, Sayyida Navsheen Gilani. Yes, ma'am. Meet, seat, team, speak, degree, meal, beach, deep, receive, believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Good That's it. year. Yes, Farinur. Ma'am, may I start? Yes, ma'am. Thank you. Yes, Meat, Farinur. feet. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Meat, feet, team, pig, jiggery, meal, beach, sheep, receive, believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Good year. Yes, Tuba. Yes, ma'am. Meet, seat, team, speak, degree, meal, beach, deep, receive, believe, cheese, repeat, season, read, freedom. Very good. आते हैं third की तरफ. Email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, eve को खींचना. Evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher, email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher. Do not make the sound too short. Keep the sound long and clear. And practice slowly and clearly. And listen carefully, right? So it's your turn now. Ma'am, can you repeat again one more time?
Sure. Email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher. इन सारों में ई की आवाज को बस आपने क्लियर रखना है ताकि आपका पूरा वर्ड जो है अच्छा सुनने में लगे. यस मैम तनवीर. email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher. Very good. How about Eman Maruf? Yes, ma'am. Email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher. Good dear. Yes, Alicia Fatima. Email, ceiling, screen, reason, key, greeting, evening, sleeping, meeting, sweet, weekly, sleepy, freezer, speaker, teacher. Oh. Very good. बहुत अच्छा. आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है. अब हम नेक्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट इज सनेसेंस. ठीक है, अल्फाजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर लेते हैं, मगर जब बात आती है सनेसेंस की वहीं पर हमारे क्या होता है, ज़हन को ब्रेक लग जाता है. तो आइए इसी को हम क्लियर करते हैं. देयर आर 5 सनेसेंस. डेली बेस पर 5 सनेसेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा कितना आपके बोलने के अंदाज में डिफरेंस क्रिएट होता है. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated the people respectfully. Don't forget, do not make the sound too short. Keep the sound long and clear and do not change I as a I. आपने E करके sound करना है. So mouth slightly open, lips spread and keep the tongue nearer to the front. Let me give some common mistakes, that is a ship, sheep, fill, feel, live, leave, sit, seat, bit, beat. Okay? आप खींचने वाले वर्ड्स में लाजम गौर करना है कि यहाँ पर डबल ई आ रहा है या सिंगल. डबल है तो आपने फिर उसका काम वही करना है जो अभी मैंने आपको वर्ड्स में बताया. Okay, everyone repeat after me. The teacher speaks clearly during every meeting. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. इसमें again and again repeat है E का sound. Please keep your seat clean and peaceful. Peaceful. She received an email this evening. She received an email this evening. Good leadership. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated people respectfully. Respectfully. Now speak along with me. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treat people respectfully. 9 p.m. अभी time here. Okay. Raise your hands, everyone. Yes, Mubarak Ali, first year.
The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good, good leadership needs clear communication skills. The police officer treated people respectfully. Now dear, you need more practice. After the class आप बैठ के इसकी practice कीजिएगा. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated the people respectfully. इसमें से सिर्फ उन अल्फाज को खींचे जो कि रेड हाईलाइटेड है. Alright? Yes, Feroza. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Okay, ma'am. I have a little bit confused about meeting. Is it meeting? Should we pronounce T letter or D letter? T as a t meeting. और आप इसे मीटिंग पढ़ सकते हैं. It's up to you. अगर आप अमेरिकन एक्सेंट पढ़ेंगे तो आप इसे ज करके साउंड करें और ब्रिटिश पढ़ रहे हैं तो आप इसे था करें. मीटिंग ब्रिटिश, मीटिंग अमेरिकन. Meeting. Okay, thank you. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skill. The police officer treated people respectfully. Very good. Yes, Asfa. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated people respectfully. You also need more practice. Yes, Maida Zainab. How about Maham Tanveer? The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated people respectfully. Very good. Yes, Rida. Yes, ma'am. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated people respectfully. Ma'am, may I? Please. That's it, ma'am. Ma'am, may I start? Good, dear Rida. Who's the speaking? Ma'am, it's me, Maida. Yes, Maida Zainab. I think you're facing connectivity issue. I'm unable to hear you. All right. Everyone, whoever participated. Ma'am, मैंने नहीं किया. As you can didn't, see, read these rules. Common mistakes. Ship, sheep. जब भी एक No. I आवाज देना हो, आप सबकी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes. But I Yes, said ma'am, you're that clear. I didn't Good. do that.
आई थिंक आप में से किसी बच्चे का इंटरनेट Kindly control on your mics, everyone. The teacher speaks clearly during every meeting. Please keep your seat clean and peaceful. She received an email this evening. Good leadership needs clear communication skills. The police officer treated a people respectfully. आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी क्लास के बाद जो भी बैठ के आपने अपने साथ करने हैं. That is Okay, that is practice minimal pairs daily. आपने क्या करना है, दो पेयर्स लेने हैं आई के, जो आपके पास स्क्रीन पे शेयर है इसी का पीडीएफ ही रख ले, इसी की प्रैक्टिस कर ले. अपना वॉइस नॉट रिकॉर्ड करें, लाइक अ शिप, शीप, fill, feel, slip, sleep, like this. Record your voice and compare with the native speakers. Second चीज, read short sentences loudly. Like at least 5 सेंटेंस आप पढ़ ले, और अगर इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो आप 10-15 सेंटेंस की अगर डेली बेस पर प्रैक्टिस करेंगे, that would be better for your accent. ये 30 डेज का मेहनत करें आप, आपका एक्सेंट ना चेंज हो तो आप बात कीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फोकस ऑन अ माउथ पोजीशन एंड अ टंग प्लेसमेंट. फोकस आप कैसे कर सकते हैं अपने माउथ पोजीशन पर. कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अपने माउथ मसल्स को हिलाते हैं, उससे क्या होता है, उसको बहुत ऑकवर्ड भी फील होते हैं और लोग फील भी कराते हैं. तो उसके लिए जरूरी है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आप मिरर के आगे खड़े हो और खुद को देख के अपने माउथ को टारगेट करें, अपने आई कांटेक्ट को टारगेट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. सेकंड चीज क्या होगी, आपका माउथ मसल कंट्रोल में आएगा, आपको खुद समझ आएगी कि किस तरह से मैं ओवर कर रही हूँ या फिर इसे मैंने कंट्रोल करना है. एंड द लास्ट वन, दैट इज कंसिस्टेंसी. अगर आप बीच में नहीं करती, बस मैम ने पढ़ा लिया दैट्स एनफ, या फिर मैंने मैथ्स होगा, हमारा नहीं. सो कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीवमेंट. So that was really nice. It's time to say a goodbye. Take care of yourself and see you tomorrow. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.